everyone. I'm Sana Bezgar, your host for this wonderful occasion, and today it really fills me with immense pride and pleasure to welcome all you wonderful people on behalf of Asia Today to the Pride of Nation Awards 2022. Let's have a huge round of applause before we begin. So, before we begin, I would just like to take you through the Asia Today Research and Media. Asia Today Research and Media is a dynamic global analytical company providing ratings, research, and analytical services. We're experienced and qualified practitioners of both market and community research. Our directors have strong expertise in market research, advertising, public relations, brand management, and franchising, encompassing a true passion for business of our clients. Asia Today Research and Media comprises talented research professionals and community research specialists working together as a group. Let me just quickly take you through the Pride of Nation Awards 2022. Asia Today Research and Media has initiated special Pride of Nation Awards to achievers across all walks of life who have made India proud and displayed excellence to India and the world. Pride of Nation Awards is an attempt to honor individuals who have significantly contributed in their own fields and brought laurels to the state. The unique reason to start Pride of Nation Awards is to motivate or to encourage them who has shown their extraordinary talent in their respective fields. Pride of Nation Awards is the only event that pays tribute to Indian success across all walks of life, emphasizing inspiring achievements and highlighting inspirational role models in the fields of art, entertainment, social work, education, healthcare, business, politics, music, sports, wildlife conservation, and environmental conservation. Let's have a huge round of applause, ladies and gentlemen. And yes, let me quickly take you through the Pride of Nation conference topics. What steps must the government take to ensure steady long-term growth? Can manufacturing be the foundation of India's future growth? And what will Indian industry look like in 2030? Innovation in healthcare delivery systems, healthcare tourism, and medical informatics in India. Technical skills or soft skills, what makes a candidate job ready? And it gives me great pride and it fills me with immense pleasure to welcome our panelists on stage for the open forum. Please put your hands together in welcoming Mr. Kulbir Singh, Vice President, Ankita Overseas. Mr. Narayan Goenka, Founder, Orson Resins and Coatings Private Limited. Let's have a huge round of applause, ladies and gentlemen, for our panelists. Dr. Sandeep Bhal Singh, Director, GI1 Hospital. Very warm welcome to all of you. Dr. Vinay Zanwar, Director, GI1 Hospital. And Mr. Diptiman Chatterjee, CEO, Indian Fashion. Once again, let us all put our hands together and welcome all the special ones on stage with a huge round of applause. Come on, can we hear it a little louder? And yes, with that, again, it gives me great pleasure to welcome on stage the one and only Dr. S.A. Anand. He's the most powerful, life-transforming business coach of India. He has been awarded more than 33 times and has been appreciated by the IIT, TMU, Manipal University, L&T and Asia Today. He has been training people from all over the world. He has trained professionals, entrepreneurs and billionaires. He has mastered human behavior as well as human emotions. He's a breakthrough coach and turnaround expert. He loves challenges and is a great expert in changing fear into confidence. Ladies and gentlemen, please put your hands together for my very dear friend, Dr. S.A. Anand. Over to you. Thank you, thank you. Thank you. So I welcome you all for this wonderful session, wonderful summit. I think it'll be a few, two of you come this side. I'll let me be in the middle. Okay.
So first of all, thank you so much for coming here. Can I have a big round of applause for these people? Okay. So this kind of summit, this kind of occasion, and this kind of place in your life comes very, sometimes. So I would request you people, at least for an hour, just be here. Leave everything and just be here. And if they speak very well, just give a big round of applause. If they don't speak well, ask them to speak better. So, Paul, I would like you to introduce, short introduction about yourself. Then tell me, what steps should be taken to take their standards to the next level. So getting the job becomes a piece of a cake for them. Okay? So you can start from this side. Thank you for him. Thank you, Paul. Thank you so much. Good evening, everyone. My name is Kulbir. I'm representing Ankita overseas. I think that should be enough, or you want some more? It's up to you. Okay. Four to five lines. Yeah. Let's talk about the topic then. Sure. When you talk about students, very rightly what the dynamic leadership in India right now doing under the leadership of Mr. Modi is they are imparting skill. When we travel abroad, we see that the focus is not entirely on passing grades, achieving degrees, but rather the person is ready, market ready for jobs. So that skill impartment angle is very important and was neglected and was least underpaid. A person who is doing a skilled job in US, say a mansion or a carpenter, can charge somewhere minimum from 80 USD to 250 USD per hour. But the same person who's working in India, he might be earning for the entire month, he'll be earning the same salary. Is this an environmental issue or is this a self-esteem issue? It was a structural issue actually. Okay. Because till date, India was actually following what other people had made a lead. But now we are becoming the leaders, so we have new ideas coming in. We are focusing on in the right direction. You're talking about Mr. Modi? Mr. Modi, right. Very rightly. I have to right. appreciate things which have been done. Right. And I'm double mastered from Canada and England. Kudos. I can see that. Kudos to you. Give a big round of applause for him. Yeah. Okay. So this is your term, and introduce yourself so people will know you better. मेरा नाम नारायण गोयन का है जी नमस्कार मैं ओरसन रेजिन एंड कोटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड का चेयरमैन हूँ जी मेरा यह कहना है देश में हमारे यहाँ प्रतिभा की कमी नहीं है संक्षिप्त साधनों में भी हमारे देश के जो बच्चे कर सकते हैं मेरे को ये कहते हुए गर्व होता है कि वर्ल्ड में कोई भी देश के बच्चे इतनी तरह से प्रगति नहीं कर सकते संक्षिप्त साधन होने के बावजूद भी हमारे यहाँ के बच्चों ने जो प्रतिभा करके दिखाया है वो हो नहीं सकती है। आज सिर्फ कमी यही है कि जो सरकार जो घोषणाएं करती है उसको असली जामा पहनाने के लिए जो आईएएस जो हैं देश के वो लोग उसको नहीं होने देते हैं। मोदी जी बहुत सी स्कीम लाते हैं, मंत्री महोदय पास करते हैं, फाइलें नीचे लटक जाती है। तो मैं ये कहता हूँ अगर युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाना है तो सरकार को भी हर क्षेत्र में देखना पड़ेगा कि ताकि वो बच्चों को प्रोत्साहन मिले। बच्चों को प्रोत्साहन कब मिलेगा? जब आप उसको प्रोत्साहित करेंगे। बच्चे जाते हैं, बच्चे घूमते हैं। मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा करना चाहता हूं। आज मैं अभी एक प्रोफेसर साहब से बात कर रहा था। भौतिक नॉलेज और पुस्तक का नॉलेज अलग है, लेकिन हमारे यहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज का अभाव है। तो मैं एक ऐसा इंस्टीट्यूट खोलना चाहता हूं जहां जो बच्चे पढ़कर आए और उसको वहां पर एक फिजिकल ट्रेनिंग दूं। उसके बाद वो बच्चे को इंडस्ट्री को भी सर्व होगा और देश की भी तरक्की होगी। तो क्या रोक रहा है आपको ये करने से? क्या रोक रहा है आपको? रोक नहीं रहा है, मैं इस दिशा में आगे बढ़ रहा हूं। वेरी गुड। और मेरे को लगता सरकार भी मेरे को साथ जाएगी। मैं स्वेच्छा से आगे बढ़ना चाहता हूं और देश को समर्पित करने। ये गवर्नमेंट ऐसा है कि अगर आपको जुनून में देख लिया, उत्साहित देख लिया और आपके अंदर क्रिएटिविटी एंड कॉन्फिडेंस देख लिया तो आपको गोद में उठा लेगा। नहीं, मैं करूंगा सर। मैं पब्लिक के बीच में बोल रहा हूँ। मैं करने के लिए बाध्य हूँ और मैं करना चाहिए, देश के लिए कुछ करना चाहिए। जी, that's good, that's good, that's good. Thank you so much. It was wonderful. It's your turn, sir. Introduce yourself. Myself, Dr. Sandeep Balsingh. I am a surgical gastroenterologist and I represent GI1 hospital.
Basically, GI1 hospital is a concept of having a single super specialty hospital in that we planned in Marathwada region to provide world-class infrastructure to the people of Marathwada. This is first of its kind institute in Marathwada and even we can say in whole of the Maharashtra. So we have come up with that institute. We are 5 directors, 3 medical gastroenterologists and 2 surgical gastroenterologists, and we are catering to population comprising practically 15 districts and even from patients who come from the other states as well. So basically I would politely differ with sir that we have lack of innovation and other things. In medical field, if we say, we know that the students or the medical students who are trained in India, they are far superior as compared to other Western nations or even Eastern nations. We are seeing people coming from abroad and we know the level of clinical expertise that they have. And after seeing other students coming from other places and then seeing students from India doing fantastically well, I really feel proud that I come from India where the medical education is fantastically good. Thank you. Okay, so the beauty is that when we differ with each other, that's what this summit will become world class. That's what it will become better. Because if we agree, then what is the purpose of this summit? So that's a beautiful thing. That's great. Thank you. And tell me one more thing, that what else you're planning to do, so that your medical students will be able to raise their standard and change the limiting belief. Because what I am seeing here is that the belief is lacking and the standard is, of course, a bit low. So basically, for a medical practitioner like me to come from a small village, setting up a place with world-class infrastructure, and then possibly building an environment where we can teach students. Basically, we all came from different districts from Marathwada so that we could build up this hospital. Okay. And now the plan is to have students from our region or say from other areas also to come down to Aurangabad, study the branch of gastroenterology, and there are many places wherein the services are in bits and pieces, but ours should be one of the centers wherein we can provide the gastroenterology related entire services under one roof. So whosoever student, be it in the form of fellowships or be it in the form of certain courses that we are planning to come up for upgradation of knowledge of the students that come to us, we should be able to give them a full platter, not in bits and pieces. Okay. And one more thing from my side, I would like you to give a big smile to the people. You're a doctor. The more you smile, the more the patient will become much faster and much better. Sure. In a short period of time. Yes. So I will request all of you to give a big smile. Just smile and speak. Smile and speak. We love smiling Right. doctors. Yeah. We can have a smiling session also later on. It was what it is. Okay. Now, sir, it's your. I am Diptiman Chatterjee. Okay. And we manufacture fashion jewelry and we export it to across 26 countries. We started when internet just arrived. I mean, at 2000, 2002, 2003. उस समय में डायल अप इंटरनेट होते थे. कुछ लोगों को यहाँ पे शायद उसका एक्सपीरियंस है. तो उस समय में हमने देखा कि जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट है, हमने कई सारे एग्जीबिशंस में आप सब गए हैं, एंड यू हैव वंडर्ड कि just look at how these people make these goods, but उसका market proper organized नहीं है. तो I thought of इसको क्यों नहीं हम US, Canada और पूरे यूरोप में why can't we take it to that platform, and why can't we act like a bridge so that they get work and the Indian craftsmanship, they can represent what they are making in the European and the US markets. Now coming to वहाँ से long story short, कमिंग टू आवर टॉपिक टुडे. आज हमारे 3 टॉपिक्स थे डिस्कशन के. उसमें पहला है मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया को लेके. डू वी रिक्वायर टू बिल्ड अप, सर ऐसा ही टॉपिक था ना मैन्युफैक्चरिंग का? Now we'll go into that. And right now, let's stick to the topic first.
The first topic is about raising the standard. Since you're also a medical professional. No, we're not into medical profession. Okay. So I'm sorry, Indian fashion. So you tell me what should be done to raise the standard in your profession, like, because I'm seeing that when you say the fashion, the family feels offended. Yeah. You know, no family wants to send their children to the fashion industry, and I love fashion industry. It's fashionable, you know. So I'll tell you a very interesting story. I'll tell you a very interesting event. सर हम जब entrepreneurship का बात करते हैं तो ये हम सोचते कि how can we develop more entrepreneurs in the country? How can we boost economy and everything? So I'll tell you my experience. Government assistance की आप बात करें या दूसरे फैक्टर्स की बात करें, इससे काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कम से कम बात करें घर में. इफ़ वी कैन स्टार्ट टॉकिंग टू यंग किड्स हु आर बिटवीन इन द टीनेजर्स, हम उस समय में अगर हम सिर्फ जॉब की बात करते रहेंगे, उस समय में हम सिर्फ अगर मेडिकल प्रोफेशंस और अदर प्रोफेशनल्स की बात करते रहेंगे, एंड वी एक्सपेक्ट वी आर गोइंग टू हैव अ बूमिंग इकोनॉमी, वी आर गोइंग टू हैव लॉट्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, सो दैट इज़ वेयर वी आर गेटिंग स्टक. So I think, you know, in our company a lot of people joined. जब वो join किए थे, they never imagined, उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो अपना business करेंगे. But gradually when they come to understand how businesses work, तो वहीं से नए entrepreneurs तो तैयार हो जाते हैं. आप अगर आप CEO बन जाते हैं, CEO मतलब बड़े कंपनी का, लाइक गूगल के, तो क्या क्राइटेरिया सेट करेंगे जॉब के लिए? मतलब अगर कोई JCO बनना चाहता है, चाहे कोई वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहता है, तो व्हाट काइंड ऑफ स्किल दे शुड हैव? सर, एबिलिटी टू डू मोर एंड मोर रिसर्च एवरी डे. रिसर्च, ओके. मैं कितना सीखना चाहता हूँ. सर, जो टेक्स्ट बुक्स में है ना, दैट्स वेरी लिमिटेड. यस. सो सॉफ्ट स्किल्स की बात करें या टेक्निकल स्किल्स की बात करें, सर आज इंटरनेट इतना खुल गया है. इफ समबडी इज कीन टू डू रिसर्च एवरी डे, देन ही कैन गो देयर. Right. So you mean creativity you're talking about, like? Sir, just curiosity. Creativity के बाद में देख लेंगे सर. Curiosity पहले generate हो जाए, creativity तो आ जाएगा वहाँ से. Okay. Thank you. Sorry, this is your turn now. Okay. So since you're also in the profession, medical profession. We are in trading. Trade profession. Trading, yeah. Training profession. So what kind of training? Traders. So tell me something more about, in 2 more lines. What should we teach to the students from your experience, from your perspective? So not only the self-esteem and standards should come up, but they should feel very confident. Not only self-esteem, self-confidence should come up. And they should feel like going, because most of the time the students, they absolutely are scared to face the interview. They have jittery, they have butterfly in their stomach just before the interview. इंटरव्यू में जाने से पहले उनकी हालत ख़राब हो जाती है. आप क्या टिप्स देंगे जिससे कि स्टूडेंट्स जो है उसका जो कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा, स्टीम बहुत बढ़ जाएगा और स्टैंडर्ड बहुत हाई हो जाएगा, बिकॉज दीज आर द थिंग्स विच यू रियली लैक? सर, इसमें दोनों चीज़ें हैं, इंटरव्यू लेने वाला और इंटरव्यू देने वाला. अमूमन होता ऐसा है कि जो इंटरव्यू ले रहे होते हैं वो जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते ही नहीं हैं. ओके. वो ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जो रिलेटेड जॉब से हैं ही नहीं. ओके. पहले तो ये क्राइटेरिया क्लियर होना चाहिए कि किसी जॉब इंटरव्यू के अंदर पूछा क्या जाए बच्चे से. राइट. अगर जैसे अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर हम बैठते हैं, अब वही चीज़ें पूछने लग जाएं बच्चे से जो कि वो पढ़ने वाला है, तो वो उसके क्लियर करना बहुत मुश्किल है उस चीज़ को. तो जिटर्स तो वैसे ही आ जाते हैं. राइट. दूसरी चीज़ ये कि जब, जैसे मैं स्किल लेबर की पहले बात कर रहा था, स्किल की, बाहर के स्कूल्स में होता क्या है कि 8, 9, 10th क्लास के अंदर आप एक एरिया चूज़ कर लेते हैं अपनी पढ़ाई करते हुए. राइट. नॉट लाइक PCMB या फिर ऐसा नहीं, वो ट्रेड की साइड जाता है कि ये ह्यूमैनिटेरियन में जाना चाहते हैं या मेडिकल में जाना चाहते हैं या इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, तो वो टेक्निकल फील्ड आ जाता है. Right. उसमें होता क्या है कि वोकेशनल ट्रेनिंग्स होती हैं, वो लोग साल में अपनी छुट्टियों के दौरान काम करते हैं, छोटे बड़े हर तरीके के काम करते हैं, जब तक वो उस स्टेज पे पहुंचते हैं कि वेयर दे आर जॉब रेडी, और इवन बिफोर दैट व्हेन दे वांट टू अप्लाई फॉर कॉलेज, उनका क्राइटेरिया बहुत साफ होता है व्हाट दे वांट टू डू. हमारे यहाँ वो क्राइटेरिया पहले ऐसा बिल्टअप करना चाहिए कि बच्चे को क्लियर हो एग्जैक्टली वो करना क्या चाहता है. Right. उसके बाद जब वो इंटरव्यू में जाए तो वहाँ पे भी एक सिनेरियो चेंज होना चाहिए कि रेलेवेंट चीज़ें पूछी जानी चाहिए और वो उस स्टैंडर्ड. What is the purpose of asking more question related to the skill than the technical skills? What is the purpose? Why do they do that?
See, there is a very common question when they ask you, tell me something about yourself. Right. And the bestest of the speaker we've flung in this very question. Right. Majority time सबसे अच्छा बोलने वाला आदमी भी रट के आता है कि मेरी 5 लाइनें बोलनी है तो मैं ऐसे बोलूँगा, क्या क्रोनोलॉजिकल उसका ऑर्डर होगा, क्या नहीं होगा, वो क्वेश्चन सुनते ही आदमी घबरा जाता है, चाहे वो कितनी मर्जी प्रैक्टिस करे. इसीलिए मैं कोई क्वेश्चन लेके नहीं आता हूँ. लेट द इंटेलिजेंस शुड आस्क क्वेश्चन. बहुत सारे लोग इससे रिलेट भी करेंगे. हाँ बोलिए सर, कुछ बोल रहे हैं. सॉफ्ट स्किल की जब हम बात कर रहे हैं ना सर, यू जस्ट मेंशन गूगल एंड ऑल. आप देख लीजिए जो सुंदर पिचाई आज गूगल के सीईओ हैं, ऐसा तो नहीं होगा कि जब वो कोडिंग कर रहे थे गूगल में ही वॉज द बेस्ट कोडर, उनसे भी बेटर कोडर रहे होंगे, बट ही हैड विजन. ही वॉज लुकिंग एट समथिंग विच अदर्स वर नॉट बीइंग एबल टू लुक एट. तो दैट इज द पार्ट ऑफ द सॉफ्ट स्किल. सॉफ्ट स्किल includes your approach towards life, your communication and a lot of things, and one of them is definitely vision. अगर आदमी के पास एक vision नहीं है तो फिर है क्या चीज़? Technical skills is a weapon, sir, but soft skill is the knowledge and wisdom to run that weapon, to utilize that weapon in a correct way, in a constructive way. See, layman's, suppose in layman's terms, a lot of people, they don't even know what is the meaning of soft skills. Because I have faced this kind of complication, because when I tell them, generally I tell them that you have to do 2 mastery, human behavior and human emotion. In place of saying soft skill, I say communication mastery. So, if you have to make the student understand that, like in a layman's term, very simple, like what is soft skill? How will you define it? You give a simple definition to the student, not to me. They are the students, suppose they are the students. Just become students for 1 minute, okay? Okay. All students, give a clap for yourself. I have turned you into a student. Okay, now they are the students and they are expecting a fabulous, simple response from the heart of yours, where they will be able to understand that, oh, this is the meaning of soft skill. Because when they say soft skills, they don't tell the softness of what is the soft skill. Right, They just tell soft skill. So, Right. इनको थोड़ा सा enlighten कीजिए. Students, we are all students out here. One simple way of approaching soft skill is, it could be, if you can explain, आप अगर कुछ सर एक्सप्लेन करना चाहते हैं, कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं सर, वेदर इट इज़ अ जॉब, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट अ जॉब इंटरव्यू एंड वेदर इन एनी प्लेटफॉर्म ऑफ लाइफ, वी आर एक्चुअली गिविंग अ प्रेजेंटेशन. हम कोई बात को समझाने का कोशिश कर रहे हैं या हम कोई बात को रखने का कोशिश कर रहे हैं, एंड इफ वी डू इट इन अ डिलीजेंट वे, देन पीपल एक्सेप्ट इट एंड उसमें अप्लॉज आता है. और अगर मैं ठीक से समझा नहीं पाया तो लोग बोर हो जाते हैं और अप्लॉज नहीं आता है, तो उसमें कोई प्रोडक्टिविटी होता नहीं है. तो one simple way of approaching soft skills could be working on how I can present myself in an energetic way. I think that's a very easy place for students to start. कि आपको एक point रखना है, भले आपने Do you agree with him? I would agree. See, being a medical professional, I would like to put it in my way. All the technical skills and other things. Being a surgeon, I know what has to be done for a patient technically, what surgery has to be done, which is good for the patient, what are all aspects that should be managed. But then the most important thing that definitely helps me to connect with my patients is the soft skill of communication. What is not taught in our curriculum is how to communicate with the patient. And that is the most important thing. If you are able to communicate nicely, be it to the patient or to the relatives, and get a good connect with them, it practically helps you to perform procedures comfortably. You are in a better place of mind, and possibly that helps you to deal with all the goods as well as the bad situations that you may have to face when the time comes like that. Okay, so it is the empathy towards patient or the relatives considering their situation. If you are able to manage them nicely, which practically is a soft skill for a consultant, I think that is the best part. So since you are a doctor, so could you please enlighten a little more about the placebo effect? Yes. Am I right? Yeah, absolutely. So placebo effect is what sometimes we utilize for certain types of patients, because we do know that there are certain disorders in gastroenterology, in abdominal problems, wherein the patient does not have actual problem, but they are all functional problems.
So sometimes stressors, sometimes some environmental factors that can play their roles and patient develop symptoms. Many a times people don't understand that stress is the biggest problem which sometimes leads to gastrointestinal problem. So in those patients we may have to use certain medications which actually do not work in a way that means it does not have a specific function, but then still they are used to cure the diseases. So that is the placebo effect, that patients should feel that we are giving them certain medications even when we are actually not giving them any medication. Right. Sir, human emotion, जैसे इमोशन कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ में, आप जैसे जो शुरू करना चाहते हैं इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे हिसाब से तो इमोशन लगता है. तो इमोशनली कैसे आप सब चीज़ को रेडी करेंगे, आदमी को रेडी करेंगे आप? देखिए, किसी भी काम को करने के लिए इमोशन तो ज़रूरी है ही. और एक सब्जेक्ट आपने उठाया था अभी, एंटरप्रेन्योरशिप. पहला सब्जेक्ट था एंटरप्रेन्योरशिप. जी. मैं पहले उसके बारे में बोलना चाहता हूँ. ओके. एंटरप्रेन्योरशिप में क्या है, बुक्स में जो लिखा हुआ है उससे नहीं होता. आपको कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार और आपके में स्किल करने की होनी चाहिए. अगर आप में चाह है, वहाँ राह है. मैं अपने बारे में एक बात बता सकता हूँ. मैं बम्बई आया था, मेरे पिताजी बहुत धनवान थे, मैं 1 रुपया लेके नहीं आया. मैंने कपड़े का काम किया. कपड़े का काम करने के बाद मेरे को केमिकल की आवश्यकता लगी तो मैंने केमिकल की फैक्ट्री लगाई. आज देखिए, मैं अपने प्रैक्टिकल अनुभव को आपके साथ शेयर कर सकता हूँ. लोग क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं और मार कहाँ खाते हैं. किसी ने उधार दिया तो उसको पैसा देना नहीं जानते. सर बीटिंग में है, सर बीजी में. मैंने अपने बच्चों को क्या सिखाया, अगर तुमने किसी से माल लिया है, उसका फोन आने के पहले अगर तुम्हारा पेमेंट लेट हो गया, तुम उनके पास जाओ, सर हमसे 2 दिन लेट हो गया, माफ कीजिएगा, कल दे दूंगा. कभी तुमसे झगड़ा नहीं होगा, तुमको बैंक की आवश्यकता नहीं होगी. आज मैं ये गर्व से कह सकता हूँ, मैं 800 करोड़ रुपए का मेरा टर्नओवर है. 1 रुपया बैंक का लोन नहीं है. वी आर ए डेब्ट फ्री कंपनी ड्यू टू इथिक्स. मार्केट खड़ा है मेरे पास माल देने के लिए, मैं नहीं मांगता हूँ. मेरे से चेक नहीं मांगते. ये बुक्स में नहीं लिखा हुआ, ये प्रैक्टिकल अनुभव है. आप अपने व्यापार के प्रति ईमानदार हैं, आप देश के प्रति जवाबदार हैं, आप देश में दूसरों को शिक्षा देना चाहते हैं, तो आपको ईमानदारी से काम करना पड़े. खाली दोषारोपण से नहीं होगा. मैं कहता हूं विदेश से हम तुलना नहीं कर सकते अपने देश से, क्योंकि यहाँ जनसंख्या बहुत है, विदेश में संसाधन बहुत है, लेकिन पब्लिक कम है. तो हमको मोदी जी लेकिन वही कर रहे हैं. मैं यही बोल रहा हूँ, मोदी जी सिखा रहे हैं कि आंख से आंख मिला के बात करो, पहला. दूसरा, मोदी जी सिखा रहे हैं कि इंसान हो वो भी इंसान है. पैसा आपके पास हो सकता है, किसी के पास पैसा है, किसी के पास शरीर नहीं है. किसी के पास पैसा है, किसी के पास शरीर है, किसी के पास स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस नहीं है. किसी के पास स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है तो सोशल एक्सेप्टेंस नहीं है उसके. तो कोई देखो, हर एक आदमी के अंदर कुछ ना कुछ कमी तो है. तो मेरा क्वेश्चन ये है यहाँ पे आपसे कि जैसे आप आए थे तो बहुत बड़ी बात है, वैसे ही अडानी साहब भी आए थे 100 रुपये लेके आपके बम्बई में. और आज आपको पता है दुनिया के कभी 2nd रिचेस्ट बन जाते, कभी 4th रिचेस्ट बन जाते. सेम स्टोरी एलोन मस्क जी की है. आप जानते हो कि वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट आदमी है. सब लोग उसको बोलते हैं ही इज़ द बिगेस्ट क्रैक पॉट. आई से नो, इज नॉट अ क्रैक पॉट. ही नोज वेयर द क्रैक एंड वेयर टू हिट. यस, क्रैक कहाँ पे है और हिट कैसे करना उनको पता है बढ़िया से. तो आप बताइए कि इच्छा है क्या आगे भी उनके जैसा बनने का, अडानी जी जैसा बनने का? देखिए, इच्छा तो होनी ही चाहिए. अगर आप में इच्छा नहीं है तो आप मनुष्य नहीं है जी. इच्छा वो शक्ति है जिससे कि देश आगे बढ़ता है, जिससे हम खुद अपने आप को आगे बढ़ाते हैं. अगर आप में खाने की इच्छा ही नहीं तो आप खाना कहाँ से खाएंगे? अगर आप में ये जागृति नहीं है, मैंने आपको एक बात कहता हूँ, अधिकार मांगा नहीं जाता, छीना जाता है. अपने कर्तव्य से छीना जाता है और लोग देने के लिए विवश हो जाते हैं. एंटरप्रेन्योरशिप में यही है कि बच्चों को ये करो वो करो. मैं कहता हूँ बिना पैसे से भी रोजगार हो सकता है, बशर्ते कि लोगों का विश्वास जीतना सबसे बड़ी सफलता है. विश्वास जीतना ही सबसे बड़ा व्यापार है, मेरा ये कहना है. हमारे पास समय का थोड़ा अभाव है. हाँ, तो आप लोग सबके पास थोड़ा समय दूंगा मैं. तो सर को दीजिए पहले फ़ोन, सबसे पहले ये. सो आप बताइए लास्ट कि आप आ जाइए. हाउ मच इज हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट, हेल्थ कितना इम्पॉर्टेंट है? Because everything is there inside. The skill is there inside, the talent is there inside, the potential is there inside, everything is inside. So
how much health is important. People are talking about the skill, they are talking about the talent, they are talking about all kind of things, but they are not talking about the foundation that's called, I believe, the foundation that's called health. So how much health is important? I think it is the most important. आपको कुछ करने के लिए, कुछ सोचने के लिए, कुछ सीखने के लिए एक शरीर और स्वस्थ दिमाग की ज़रूरत है. Right. और उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. और आई थिंक वो एक ऐसा फैक्टर है कि हम चाहते ना चाहते हुए, आपने जैसे बोला स्ट्रेस बहुत बड़ी, किसी ने बोला था पैनल में, स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इशू राइट नाउ. लोगों को अकेले बैठ के स्ट्रेस हो जाता है, किसी को ज़्यादा लोगों से मिल के स्ट्रेस हो जाता है, किसी को एक दिन स्ट्रेस होता है, दूसरे दिन नहीं होता है. तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं. अपने आप को हेल्दी रखेंगे, माइंड को हेल्दी रखेंगे, तो बाकी चीज़ें सेकेंडरी चल सकती हैं. माइंड एक ऐसा मैकेनिज्म है जो इतना ट्रिकी है. आप सब लोग बैठे हैं, मैं गारंटी देता हूँ धरती पे 99% लोग जो है वो सुनते कम है, बोलते ज़्यादा हैं. इसलिए नहीं है कि उनका इंटेंशन ख़राब है, बिकॉज दे हैव नॉट बीन ट्रेन्ड. मेंटल एंड साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग हैज़ नॉट बीन गिवन टू दीज पीपल. सो सर आप बताइए कि ऐसा क्या मेंटल और साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग देंगे कि बाकी सब लोगों के पास भी 8,000 करोड़ आ जाए. नहीं सर, चाहिए कि नहीं? ये सर, do you agree, all of you agree that if he has 800 crores, so we should take a tips and we should quadruple our income? Yes or no? Yes. अगर आप नहीं बोल रहे हैं तो आप गलत जगह पे हैं. Yes or no sir? Yes. सर इसके लिए मैं 2 लाइन की एक कविता बोलता हूँ. वाह. जो मैंने बचपन में पढ़ी थी और यही जीवन का उद्देश्य है. आप अटल बिहारी वाजपेयी जो बनने वाले बीत हैं. गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, मानो वह बहुत प्यारा था. जो छूट गया सो छूट गया, जो टूट गया सो टूट गया. अंबर के तारे देखो कितने तारे टूटे, कितने जगमगाए. आज मेरे को इंडस्ट्रीज में लॉस हो गया, तो मेरे को वो लॉस को नहीं देखना, आगे क्या करना है यही देखना है. बिल्कुल बिल्कुल सही. अगर हम आगे देखते रहेंगे तो हमको सफलता से कोई नहीं रोक सकता. अगर हम पिछली बात को सोचते रहेंगे तो हम गर्त में चले जाएंगे. दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात सर ने कहा हेल्थ के लिए. तो पहले जमाने में लोग कहते थे जल्दी उठो और जल्दी सो. आज के स्टूडेंट गलत करते हैं, रात को देरी से सो और देरी से उठो. यही हेल्थ का जो है, हेल्थ नहीं होने का ये सबसे बड़ा उदाहरण है. लेकिन ये सिस्टम सिर्फ ये इसलिए नहीं है क्योंकि स्टूडेंट लेट से उठना चाहते हैं. ये अमेरिकन सिस्टम जो है, जो वहाँ काम करते हैं, उनके रिलेटिव्स वहाँ रहते हैं, तो उनका क्या होता है, वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनसे बात करने के लिए ये करना पड़ता है. सर नहीं सर, मैं ये कहता हूँ वो फोर्स नहीं करते हैं आपको. ओके. ये आपकी सोच पर डिपेंड करता है. ओके. कि आप अपने आप को कैसे जिंदा रखेंगे, जी. कैसे हेल्दी रखेंगे. अगर आप हेल्दी नहीं तो देश की सेवा नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते. मैं तो कहता हूँ हेल्थ सबसे महत्वपूर्ण साधन है जिंदगी का. अगर हेल्थ नहीं है तो कुछ नहीं है. बिल्कुल. थैंक यू सर. आप क्या बोलना चाहेंगे हेल्थ के बारे में? सर हेल्थ तो सबसे इम्पोर्टेंट, आपका तो सबसे प्यारा टॉपिक होगा ये. यस डेफिनेटली. वेरी. सो बेसिकली हम अभी जो बोल रहे हैं कि हेल्थ इम्पॉर्टेंट है, डेफिनेटली हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट है. एंड रादर देन गोइंग टूवर्ड्स मेडिकेशन, दवा वगैरह करो, उससे अच्छा है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर. राइट. फॉर्चुनेटली मेनी अ टाइम्स जो इनिशियली हम देखते थे, लाइक 5-10 years बैक, जो हम लोग देखते थे कि बिकॉज ऑफ डाइट, मतलब बिकॉज ऑफ फॉल्टी डाइट, बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल, डिफरेंट लाइफस्टाइल्स, जो पेशेंट को डिसीजेस होते थे. बट नाउ डेज थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ रहा है. पॉसिबली इम्पैक्ट तो है ही, क्योंकि एवरीवेयर इट इज़ सेड कि वेस्टर्न कल्चर हो रहा है. पॉसिबली डाइट में भी वो चेंजेस आ रहे हैं. बट जो यंगर जनरेशन्स है, दे आर बिकमिंग अवेयर कि उनको थोड़ा सा हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहिए, खुद से होके एक्सरसाइज करना है, हेल्दी डाइट लेना है. तो पीपल आर फॉलोइंग दोज थिंग्स. सो इनिशियल डेज में जो हम देख रहे थे कि लोगों को बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल जो डिसीजेस है वो होने का जो परसेंटेज था, सो लाइफस्टाइल डिजीज लाइक शुगर डिजीज, थायराइड, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स जो हम बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ ओबेसिटी. ओबेसिटी की वजह से होने वाली सारी प्रॉब्लम्स, बीट डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड प्रॉब्लम्स है, या फिर पीसीओएस जैसे लेडीज प्रॉब्लम्स वगैरह है. तो दोज थिंग्स आर ग्रेजुअली कमिंग डाउन. पीपल आर बिकमिंग मोर अवेयर, मतलब दे आर हेल्पिंग देमसेल्व्स एंड सोसाइटी एट लार्ज कि यहाँ से वो खुद से होके बाहर आए एंड देन दे फॉलो अ हेल्दी लाइफस्टाइल. सर हेल्थ के बारे में सब मोर और लेस अभी कॉन्शियस हैं, बट 2 एस्पेक्ट हैं हेल्थ का. एक तो फिजिकल हेल्थ, और वो जब भी थोड़ा सा इधर उधर होता है, हमारे पास इतने साधन हैं, तुरंत हम कॉन्शियस हो भी जाते हैं अगर नहीं भी हैं तो. बट वन थिंग दैट अफेक्ट्स अस मोर
is the mental health when we think physically हम ठीक हैं. मतलब mentally कोई बंदा एकदम depressed है या थोड़ा सा down है, और वो थोड़ा सा अगर down है उसकी productivity hamper होती है. तो फिजिकल जो हेल्थ है उसके लिए तो साधन है, मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए आई थिंक एनर्जेटिक प्लेसेस, एनर्जेटिक कंपेनियनशिप, जैसे आज हम यहाँ पे बैठे हैं सर, दिस इज गोइंग टू बी अ मेडिसिन फॉर मंथ्स फॉर द एंटायर टीम हियर, जो भी यहाँ पे बैठे हैं, ये जो हम बैठे हैं इतने सारे लोगों के बीच में, व्हाट आई विल बी टेकिंग होम इज द एनर्जी, इज द एंथुजियाज्म. तो उससे सर मेंटल हेल्थ तो काफ़ी फर्क पड़ता है. So let us work on the It is physical. last line. It is said the body and mind is the part of the same system. Anything happens to the body affects the mind. Anything happens to the mind affects the body. So, can we work on more on physiology? Like I'm sitting in this posture and my head is down. Automatically, I'll start talking to myself and I'll go into unresourceful state. So, will it be possible for the teachers and the educators and I would say all the people, they are the guide in this field, that they should teach how to use optimum physiology so that sitting in the in the right posture itself, the body mind will connect through the spinal cord. But sir, just physiology, sitting in the right posture, doing correct the kind of exercises, is that enough, sir? जैसे my question to you is, I'm very curious here. जैसे एक बच्चा है, वो बहुत एनर्जेटिक है, वो फील्ड में जाता है, वो खेल लेता है, उसको आपको बोलने का जरूरत नहीं होता है कि जाके आप एक्सरसाइज करो. So if you can generate that kind of enthusiasm in him, he goes to the field and he plays. सर बाकी सारी चीज़ें तो ऐसे ही हो जाएंगी. मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं रिसर्च पे बोल रहा हूँ. रिसर्च कहता है कि if your mind is not functioning, change the body. If your body is not functioning, change the picture in your head, change internal dialogue, and just move your body. Like if I just, I'm not feeling good and just I put a music and start dancing. Immediately I come into resourceful state and I start speaking better. So whether the student, because I'm not saying, so please don't get angry with me. Okay, please, that's what happens. People get angry with me. बहुत खतरनाक question पूछता है. So please don't get angry with me. So the question is very simple here. If so, the most important thing is that can we teach students that sit in the resourceful state, chest up, looking up, because it is said if you look up, you will go up. So मैं इसलिए बोला, मेरा नहीं ये research बोलता है. तो इसमें मेरे को मत बोलना कुछ आप. So ये बोल रहा हूँ. तो that's the reason I'm telling you. Yes? Yes. So yes. सत्य है. 1 मिनट टाइम है हमारे पास. 10 सेकंड में 10 सेकंड. एक लाइन हमारे पास टाइम नहीं. हाँ. अगर दिमाग संतुलित है तो सारा ही शरीर का भाग संतुलित है. सर दिमाग इतना बदमाश है. नहीं, इतना बदमाश चीज है. मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो कोच हूँ, तो मुझे पता है कि कैसे इसको ठीक करना है. लेकिन छोटी छोटी चीज़ों के कारण लोग, आपको पता होगा, आप तो डॉक्टर हैं, कि क्या हालत होता है. इनको पता है कि मैक्सिमम जो डिजीज़ होता है मैक्सिमम मेंटल होता है, ज़्यादातर फिजिकल नहीं होता है कि नहीं. तो मैं सर एक प्राणायाम ओम कीजिए, आप आंख बंद कीजिए, आपका दिमाग शांत होगा और निश्चित रूप से सफलता मिलेगी. मैं एक ही लाइन बोलूंगा. बिल्कुल बिल्कुल सर, आप बताइए. 10 सेकेंड. सर जैसे आपने बोला कोचेस स्कूल्स में होने चाहिए. एब्सोल्युटली. पहले के स्कूल्स में लोग बगैर कुछ टेक लगाए सीधे बैठा करते थे. अगर आज के स्कूल में कुर्सी हटा देंगे तो आपके ऊपर केस हो जाएगा. तो थोड़ा सा नज़रिया पेरेंट्स को भी चेंज करना पड़ेगा. ये एक्चुअली हुआ है यूएस में, जब चल रहा था, यूएस में जब प्रॉब्लम चल रहा था, तो उस समय जो रिचेस्ट आदमी है, जो एलन मस्क, उस पर गवर्नमेंट ने किया था, वो अड़ गया वो और वो करवा दिया. उसने मास्क भी नहीं पहना. बोला जब तक आप ठीक नहीं करोगे हम नहीं पहनते मास्क. तो बोला कि तुम इतना पैसे कमा रहे हो, $9 बिलियन देना पड़ेगा तुमको, तभी वर्ल्ड का प्रॉब्लम खत्म होगा. बोला आप WHO को बोलो मुझे बना के दे, बैलेंस शीट कर के दे, मैं ठीक कर देता हूँ. WHO ने दिया, उसने पैसे दे दिए $9 बिलियन. बिकॉज ही सेड इफ द थिंग्स आर करेक्ट, इफ इट्स इन ऑर्डर, आई एम रेडी टू टेक द स्टेप्स. यस और नो? सो दैट्स द थिंग इज, एक लाइन. यस, एक लाइन फ्रॉम ऑल द साइड्स. And then we will call it a day. Okay. So mental health is definitely important, but what I would suggest, as sir was saying कि बच्चे. Dr. Anand. Yes, Dr. Anand. Yeah. So जैसे आपका पोस्चर आप ठीक कर लो, पोस्चर भी ठीक करना है. जो इम्प्रेशन हमने बना दिया है कि बच्चों को सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है, तो आई वुड लाइक इट टू बी अ कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट, बी इट फिजिकल,
mental and physiological, everything combined. मैं जब कोच करता हूँ लोगों को ना सर, तो मैं 8 आवर्स में से 2 घंटे डांस कराता हूँ। रिसोर्सफुल स्टेट में खाना खा के आते हैं लोग, खाना खा के आते हैं लोग, ऐसे करके बैठते हैं। मैं बोला भैया खड़ा हो जाओ पहले, एंड देन आई से जंप कराता हूँ पूरा कुंडली वाला। उसके बाद वो रिसोर्सफुल स्टेट में आ जाते हैं, उसके बाद ट्रेनिंग शुरू हो जाए। बिकॉज इफ़ यू आर नॉट इन रिसोर्सफुल स्टेट देन यू विल बी गिविंग मी एट लास्ट, ये ट्रेनर को ट्रेनिंग देना नहीं आता। ट्रेनर को, तो इसलिए ह्यूमन साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है सर। लास्ट आपकी तरफ से आप अपना इस पे ज्ञान वापी। I have always seen, शायद आप भी अग्री करेंगे, I repeat again, an association of very positive people. देखिए सर आप बोल रहे थे 200%, 200%, I agree with you, राइट सर। अकेले कई बार नहीं हो पाता है, और बगल वाला अगर कुछ कर रहा है तो हम अपने आप उसको एक्यूमुलेट कर लेते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो आई थिंक being amidst energetic people, being amidst progressive people is one of the best steps that we can take towards improving overall health. Now it's my turn. So I would say I have this. Thank you. So I would say the Buddha's quote, as he says, you are what you think, all that you are arises with your thought. With your thought you make the world. If you think yourself as smart, if you believe yourself as smart, if you think that you can do something and you start a journey and you're not afraid of failing, things will become very easy for you, very simple for you. And Dr. Saab hai na, फिर देख लेंगे सब कुछ होगा तो. So thank you so much. It was wonderful. You people were very good and it was wonderful discussion. Do you agree with me? Thank you, sir. Thank you so much. Yes. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. Thanks. Thank you, Dr. S. Anand, and thanks to our panelists.